Good morning, students. Once again, welcome in history class. You know very well which chapter is going on, Advent of Europeans. In the previous video, we have discussed about the Portuguese came in India, Dutch came in India. We have discussed, and English came. It means Britishers came. We have discussed three European powers. Today we will discuss about the Danish and French, and after the war fought between the French and the English. I hope you have learned and write all the important topics from that video. So today we will start our new topic. Danish. They were not much successful here because they were not powerful as comparatively to the Britishers. They came in. They have set up their factories, English East India Company, in 1616, and they set up the first factory at Serampur in Bengal. And they made the capital where? Trankebar, or where it is Trankebar is situated in Tamil Nadu. These are the important points. In which year Danish East India Company established? 1616. And where they have set up the first factory? Serampur. So where is Serampur? In Bengal. And where they made their capital? Trankebar, or where it is situated Trankebar in Tamil Nadu. They were not powerful like Britishers. So what they were thinking? They decided if we sold all the property to the Britishers. In 1845 they sold all the property to the Britishers, and after that they returned back to their country. So in the Danish we are having only 4 and 5 main points. In which year Danish East India Company established? 1616. Where they have set up the first factory? Serampur. And they made the capital Trankebar, where it is situated in Tamil Nadu. And in 1845 they sold all the properties and returned back to their country. Now we will discuss the last European power, French. They came later. सबसे जितनी भी यूरोपियन पावर थी, सबसे बाद में आने वाले कौन थे? फ्रेंच. और सबसे पहले आने वाले कौन थे? पोर्तुगीज. सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे फ्रेंच. यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी established by in which year it was established? 1664 by Colbert. Who was the Colbert? Colbert was the minister of King Louis XIV. यानी कि फ्रांस की हम बात कर रहे हैं. फ्रांस में उस समय रूलर कौन था? लुइस 14. आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन से रूलर के समय हुई थी. जब फ्रांस में कौन रूल कर रहा था? उसमें किंग लुइस 16. बट इंडिया के अंदर जब उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश की, आए जब इंडिया के अंदर कोलबर्ट, तो उस समय वहां पर कौन रूल कर रहा था? लुइस 14. और इन विच ईयर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश? 1664. नाउ when they have set up the first factory, but before that we have think one more point. Britishers and French, they were not having the good relation in the starting. They were the enemies to each other. वो पुराने दुश्मन थे एक दूसरे के. तो इट मीन्स फ्रेंच ने भी वही फैक्ट्री सेटअप की पहली जहां पर ब्रिटिशर्स ने की थी. ब्रिटिशर्स ने अपने लास्ट टॉपिक में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि वेयर दे हैव सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत 1613. तो सेम वे फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत एट 1668. यानी कि दे मेड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? 1664. और इन विच ईयर they have set up the first factory in Surat? 1668. After that, Masulipatanam. In Masulipatanam, they established the factory in 1669. And after that, in 1673, they captured Pondicherry. And after that, they made the capital of Pondicherry. अभी भी हम देखते हैं फ्रेंच चले गए काफी, मतलब पौंडीचेरी में भी हमें फ्रेंच के लोग मिल जाएंगे. एंग्लो फ्रेंच वी कैन से दैट. एंड दैट टाइम हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रांस? डुप्ले वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच. तो बेटा रिकॉल वन टाइम अबाउट द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इन विच ईयर? 1664. एंड हु मेड दिस? हु एस्टैब्लिश? कोलबर्ट. और दैट टाइम हु वाज द रूलर? लुइस 14. और वेयर दे हैव सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? और where they have set up the first factory? In 1668 at Surat. After that in Masulipatanam 1669. After that they captured the
Pondicherry in which year? 1673. And after that Pondicherry made the capital of France. And who was the Governor General of France that time? Dupleix. Who was the Dupleix? Now the competitions between English and French political uprising aroused in Hyderabad and Carnatic, and English and French had exploited the situation. This led to Carnatic Wars. ये Carnatic Wars का क्या main reasons था? Carnatic Wars situated on the coastal on Tamil Nadu. तो यानी कि everywhere, यानी कि French और English both wants to capture that area. For that purpose, they fought three Carnatic Wars. Now we will discuss about the three Carnatic Wars one by one. The companies of England and France now came to dominate the Indian trade. They were involved in conflicts, यानी कि they were conflicts to each other as rivals. They were not the good relationship. These rivalries led them to wars with each other and also to interfere in the political affairs of India. Now it's English and French, both the powers. Now what they have started, they have to start to interfere in the political affairs also in India. The three wars they fought from, यानी कि 3 wars fought between 1746 to 1763. 1746 to 1763. This war was known as Carnatic War. Now we will discuss about one by one. The first Carnatic War. The first Carnatic War fought between 1746 to 1748. Now Madras was captured by La Bourdonnais, a military of Mauritius, on the request of Dupleix. यानी कि ला बोर्डिनिस ने क्या कर लिया, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था उसके ऊपर कैप्चर कर लिया. किसकी रिक्वेस्ट से? डुप्लेक्स की रिक्वेस्ट से. तो नाउ व्हाट ब्रिटिशर्स व्हाट दे हैव डन? नाउ ब्रिटिशर्स वर हेल्पलेस. नाउ दे हैव टू रिक्वेस्ट टू द Anuruddin. Who was the Anuruddin? The Carnatic Nawab. That time who was the Nawab of the Carnatic? Anuruddin. तो यानी कि ब्रिटिशर्स ने किससे हेल्प ली इसके लिए? अनुरुद्दीन से. He failed to defeat French. Anuruddin sent to army, but he defeated. He failed. After that, what happened? La Bourdonnais took money. यानी कि La Bourdonnais took money from the Britishers and returned Madras back to British. यानी कि ला बोर्डिनिस ने क्या लिया? ब्रिटिश से मनी लेकर मद्रास क्या कर दिया? उनको रिटर्न कर दिया, वापिस कर दिया गया. तो इस बात से क्या हुआ? डुप्लेक्स वॉज वेरी एंग्री. डुप्लेक्स बड़ा गुस्सा हो गए. एंड व्हाट ही हैव डन? ही अटेम्प्ट टू अटैक ऑन मद्रास, बट डुप्लेक्स वॉज ऑल्सो फेल. डुप्लेक्स को भी सफलता हासिल नहीं हुई. तो आफ्टर दैट द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. यानी कि द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. तो यानी कि वी हैव डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर फॉर्ट बिटवीन इन विच ईयर? 1746 to 1748. Who attacked the Madras from the French side? La Bourdonnais, a military of Mauritius, on the request of the Dupleix. That time Britishers were helpless. They have taken help to Anuruddin. Who was the Anuruddin? Nawab of Carnatic. And after that, La Bourdonnais took money from the Britishers and give back to Madras. And that war ended with the Treaty of Aix-la-Chapelle. Now we will discuss about the second Carnatic War, 1749 to 1754. Now what happened? French made. अब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स का था कि किसको वहां का निजाम बनाया जाए. कार्नाटिक का जो निजाम है उसको बनाया जाए वहां का निजाम, या जो हैदराबाद का है उसको बनाया जाए. They were having the conflict. French made Salvat, Nizam of Hyderabad. Who was the French made Salvat, Nizam of Hyderabad, और बसी was appointed to protect him. यानी कि फ्रेंच किसके सपोर्टर थे? निजाम ऑफ हैदराबाद के. और उसको जो सालबाद था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया? बसी. और इन विच ईयर दैट वॉर फॉर बिटवीन टू पावर्स? 1749 to 1754. नाउ चंदा साहिब नवाब ऑफ कार्नाटिक. और चंदा साहिब कहाँ के नवाब थे? कार्नाटिक. विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्रेंच. फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया? चंदा साहिब को नवाब बना दिया कार्नाटिक का विद द सपोर्ट ऑफ फ्रेंच. नाउ चंदा साहिब डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. लेकिन चंदा साहिब को किसने हरा दिया?
रॉबर्ट क्लाइव ने. And undertaken Arcot, the capital of Carnatic. What was the name of the capital of Carnatic? Arcot, or that was captured या undertaken by the Robert Clive. Now after that what happened? Then चंदा साहिब put into jail. चंदा साहिब को जेल में डाल दिया गया, बाद में इसको मार दिया गया. After that मोहम्मद अली नवाब ऑफ कार्नेटिक. बाद में नवाब ऑफ यानी कि कार्नेटिक का नवाब किसको बनाया गया, किसके सपोर्ट से? ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से. मोहम्मद अली को यहाँ का नवाब बना दिया कार्नेटिक का. तो नाउ इट मीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द पौंडीचेरी ट्रीटी. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किससे एंड हुआ था? एक्सला चैपल. और सेकेंड कार्नेटिक वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी. अगेन वी कैन रिकॉल Second Carnatic War 1749 to 1754. French made Salbat Nizam of Hyderabad, or Bassi was appointed to protect him. And who was the Nawab of Karnataka that time? Chanda Sahib. With the help of किसके सपोर्ट से बनाया गया था? फ्रेंच. यानी कि फ्रेंच किसके सपोर्टर थे? कार्नेटिक नवाब के. But that Chanda Sahib defeated by Robert Clive, and Robert Clive undertaken. रॉबर्ट क्लाइव ने क्या ले लिया? कौन सी कैपिटल ले लिया? आरकोट, द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक. एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स मोहम्मद अली बिकेम द नवाब ऑफ कार्नेटिक, और दैट वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ट्रीटी. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड कार्नेटिक वॉर that fought between 1756 to 1763. Approximately how many years? 7 years that war fought. Comic D. Lally captured Vandivos in 1760. और वांडीवोस कहाँ था? ये तमिलनाडु में. इसीलिए इस थर्ड कार्नेटिक वॉर को बैटल ऑफ वांडीवोस के नाम से भी जाना जाता है. दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आस्क्ड कि विच कार्नेटिक वॉर is also known as the Vandivos battle. So what was the answer? What is the answer? Third Carnatic War. And it was fought between how many years? 7 years, 1756 to 1763. Comet de Lally captured Vandivos in which year? 1760. But Sir Eyre Coote of English defeated French. Sir Eyre Coote of English defeated French, and Bussy was jailed. फ्रेंच सर आइयर कूट के नेतृत्व में क्या हुआ? इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच आर्मी को पूरी तरीके से हरा दिया गया फ्रेंच को. एंड बस्सी वो जेल, और बस्सी को क्या कर दिया गया? टू पुट इनटू जेल. एंड कूट यानी कि सर आइयर कूट अटैक पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी किसका मेन पार्ट था? फ्रेंच का. अटैक पौंडीचेरी यानी कि उन्होंने पौंडीचेरी के ऊपर कैप्चर कर लिया. और दिस वॉर वाज एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन विच ईयर? 1763. यानी कि दैट वॉर एंडेड विद Treaty of Paris in 1763. Or the third Carnatic War is also known as the Vandivos War. What happened? But after the Second World War, Second Carnatic War, what happened? They sent back to the duplex. Duplex को वापिस भेज दिया था. And now what they were thinking in the when they lost, it means in the third after the third Carnatic War, French lost all the powers in India. Now who is having all the powers? Britishers is having all the powers. They established supremacy in India. Now who's all over? Who is having all the powers in India? Now Britishers. Now all the European powers came and one by one. Now all the powers taken by the English. Students, we have covered most of the topics in related to that topic, advent of Europeans. Maybe any some points left, so I will make the notes and then I will provide you. But I request to all the students, please make the notes, write down all the important points and learn it. Because when all the important year you will learn. आपको इसको लर्न करना होगा, याद करना होगा. जब तक आप याद नहीं करोगे आपको रिकॉल नहीं रहेगा. जैसे आपको द कार्नेटिक वॉर कब से कब, एक समरी बना लो. 1746 to 1763. After that first Carnatic War 1746 to 1748. After that 1749 to 1754. And after that third Carnatic War 1756 to 1763. All the important points जैसे Battle of Buxar 1764. Diwani right they got in which year? 1765. After the Diwani right what they got in India? In Bengal, Bihar and Odisha they got the
revenue system collection system, यानी कि they go to the Diwani rights, यानी कि now they can collect the taxes from these area, from which area? Bengal, Bihar and Odisha. It means in the French who is playing the main important role? Dupleix. Or from the Britishers who is playing the main role in that time, during that time? Robert Clive. So we have discussed about all the powers: Portuguese, Dutch, English, Danish and French. So students, you will learn all the important points. Thank you.